welcome. You're watching Morning Markets on Money9. I'm Sakshi, Batra, and this is where we get you all the key updates you need to begin your trading day right. तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन का। कल का ट्रेडिंग सेशन काफी अच्छा रहा डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए, स्पेशली आफ्टर द डे बिफोर एक्सटेंडेड ट्रेड। हम लोगों ने देखा कि 51,000 के ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोजिंग हुई है सेंसेक्स की, 250 अंकों की बढ़त और 0.5% तक की तेजी कल के सेशन में हमें देखने को मिली। वहीं निफ्टी 50 ने भी अपना 15,000 का लेवल डेफिनेटली प्रोटेक्ट किया, 115 पॉइंट्स का गेन यहां और 0.7% तक की मजबूती यहां दिखी। निफ्टी बैंक में शुरुआती ट्रेड में अच्छा ट्रेड था और काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, 2% तक के आसपास की भी तेजी थी। वो ट्रिम डाउन हुई है, लेकिन फिर भी गेन्स के साथ 36,549 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक बंद हुआ। पार्टिसिपेशन ब्रॉड मार्केट इंडिसेस से भी आया और 1 से 1.5% तक की बढ़त हमें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। तो हालांकि डोमेस्टिक मार्केट्स की वजह से जो हैंडओवर मिले हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन ओवरनाइट जो क्यूज आए हैं वो वीक देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आज की ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर आप ये याद रखिए कि आज मार्च सीरीज का पहला दिन होगा, पहला ट्रेडिंग सेशन होगा और हो सकता है ये वीकनेस के साथ ही शुरू हो। क्यों होगा ये वीकनेस के साथ? क्योंकि एक शार्प राइज हमने देखा है यूएस बॉन्ड यील्ड्स में, जिसकी वजह से यूएस मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो ओवरनाइट काफी सेल ऑफ देखने को मिला था। अगर आप देखें तो काफी वीकनेस के साथ यहां पर मूवमेंट हमें देखने को मिला था डाउ जोन्स, एस&पी और नैस्डैक में। इसके अलावा अगर आप देखें तो नैस्डैक ने अपना लार्जेस्ट डेली परसेंटेज जो है वो फॉल पोस्ट किया था लास्ट 4 मंथ्स में। एशियन मार्केट्स में देखें तो वहां पर भी संकेत अगर आप जिस तरीके से देखेंगे एशियन मार्केट्स में भी वीकनेस के देखने को मिल रहे हैं। निके, हैंगसेंग और शंघाई तीनों में ही अगर आप देखेंगे तो शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, 2.5%, 2% और 1.5% तक की वीकनेस हमें एशियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए संकेत काफी नेगेटिव आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी से 2% तक का लॉस हमें देखने को मिल रहा है एसजीएक्स निफ्टी में, और खास तौर पर ये 15,000 के नीचे के लेवल्स दर्शा रहा है ओपनिंग लेवल्स में 14,902 के लेवल्स पर, यानी कि एसजीएक्स निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रुपी में किस तरीके का मूवमेंट है। स्लाइट पॉजिटिव टिक्स ऑन द रुपी, 72.42 against the dollar is what the rupee has been trading at. It has been in a very tight range and that is what it is expected, not too much fluctuation on the rupee side as well. क्रूड ऑयल मार्केट्स की बात करें तो थोड़ी बहुत माइल्ड वीकनेस या करेक्शन अगर आप देखेंगे तो कल की तेजी से हमें देखने को मिली है। 0.27% तक की वीकनेस अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट में $66.7 टू द बैरल के हिसाब से। WTI नाइमेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो आधे प्रतिशत तक की वीकनेस देखने को मिल रही है और $63.20 पर बैरल के हिसाब से यहां पर WTI क्रूड जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये जो क्रूड ऑयल प्राइसेस का लगातार मूवमेंट हमने अब देखा है, वहां पर अब थोड़ी बहुत करेक्शन की भी उम्मीद जताई जा रही है। कुछ स्टॉक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आज आप नजर रखिए एलिकॉन इंजीनियरिंग पे। कल की ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प राइज था 7% के आसपास का। प्रोमोटर एंटिटी ने प्रयास इंजीनियरिंग रिलीज प्लेज किया है अपना 5.56% इक्विटी का। तो ये जो प्लेज शेयर्स को रिलीज करवाया है उसकी वजह से एंथुजियाज्म था और ये रैली आज भी एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। अगला शेयर जहां पर आपको नजर रखती है वो है हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स का, 1.25% तक की वीकनेस। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया है सोलापुर फैसिलिटी महाराष्ट्र में भी। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टॉक देखते हैं केएसबी, 1.5% तक की मजबूती कल रिपोर्ट किए हैं कंपनी ने नतीजे अपने Q4 कैलेंडर ईयर 20 के, और अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आया है 32 करोड़ रुपए के आसपास का, और ये ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फ्लैटिश टू स्लाइट नेगेटिव टोन पर प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने रिपोर्ट किया है। हालांकि रेवेन्यू बढ़ा है 369 करोड़ रुपीस तक के आसपास का आया है वर्सेस ईयर ऑन ईयर 337 करोड़ रुपीस। स्लाइट अपटिक्स कैन बी सीन ऑन दिस स्टॉक आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स। Moving on to Rain Industries now. Slight downtick was seen in yesterday's trading session. Again, the results have been reported. Company ने higher consolidated profit report किया 321 crore rupees का Q4 calendar year 20 में as against 121 crore rupees. So there's a sharp uptick that you can see on the profit front. Revenues, however, if you see, they have fallen to 2640 crore rupees from 2830 crore rupees on a year-on-year basis. So you may actually see a mixed trade happening on this counter in today's trading session.
Moving on to Vesuvius India, another company that has reported earnings. It reported a lower profit of 16 crore rupees, down from 22.7 crore rupees on a year-on-year basis. Again, the revenue, however, has jumped from 228 crore rupees to 234 crore rupees. Not extremely encouraging, but we'll just have to see how the rates are reflecting the kind of earnings that have been reported by the company as well. Moving on to the primary space then, Hiranba Industries IPO has been subscribed 83.3 times. As of yesterday, the IPO has been closed now, and we'll wait for its listing in the next week. If you see, there has been quite a strong, overwhelming response that we have seen to the IPO. 83 times, that's a sharp, kind of a subscription that we've already seen on Hiranba Industries. We'll have to wait and see how, the listing really happens the next week as well. Another new listing is going to take place today, and that is of the Railtel IPO that had got open for subscription in last week and closed on February 18. Remember, the shares will be listed today. The IPO was subscribed again, quite strong, response to the IPO. 42.4 times already was the subscription. We'll just have to see how the listing happens. If you see, the listing is expected if you talk about the grey market premium, there has been an indication of 10 to 25% premium on February 26, given the monopolistic business that the company has, the diversified portfolio of service and solution, and the key position as the partner of digital transformation of the Indian Railways as well. So all of these factors may actually augur well for the company and the listing as well. Moving on to the stock recommendations of the day. In case you are looking to, buy any stock in the auto space, Nilesh Jain believes that Tata Motors could actually give you good returns. 325 is the stop loss that you need to maintain with a target price of 348 rupees per share. Moving on to another stock, Muthoot Finance should be on your radar. 1308 is the stop loss that you need to keep here with a target price of 1370. Remember, 2.7% increase was also seen in the yesterday's trading session for this counter as well. Moving on to Coromandel International, again, upticks were seen yesterday. You can keep a target of 820 rupees with a stop loss of 760 rupees per share. Moving on to another counter, and that is from the IT space. The IT bigwig, Tata Consultancy Services, is actually expected to rise further. And Milan Vaishnav believes that 3095 could be the target price that you can keep on your radar with a stop loss of 2940. Another stock that Milan has recommended would be from the banking space, and IndusInd Bank is where he expects to see some rise further from the current levels. 1160 is the price at which you can keep the target of the stock with a stop loss at 1075 on the counter. Moving on to the auto space, where Milan Vaishnav believes that Ashok Leyland looks good on charts. 3.5% uptick was seen yesterday. The target price you can keep on the stock would be 136 and a stop loss of 127 on the counter as well. So these are the 6 picks that you can start your trading day with. We will be with you for all the opening action and beyond as well. So stay tuned with us on Money9.